हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैसे निबंध लिखते हैं. आई मीन हाउ टू राइट एन एसे और हाउ टू इम्प्रूव योर एसे राइटिंग. देखो भाई, ऐसे होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं. When we take a test, we see, we can easily catch this, question. Write an essay on education system. But what do you mean by that? Yes, I'm asked to write an essay, but what is the meaning of this word essay? वो मतलब क्या होता है? Essay means to attempt. essay का मतलब होता है attempt करना. ठीक है. अरे जब बात आ रही है एजुकेशन सिस्टम पे ऐसे लिखने की, तो उसका मतलब है उस पर एक अटेम्प्ट करो टू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस. ओके, फॉर दिस वीडियो, this will be the part 1 for essay writing, and I'll make a playlist of that. And till then, let me continue this lecture. Okay, right now I am holding this Bible. Actually it is not a Bible, but yeah, it's Renan Martin, and it is very closest to my heart. And from this I'll teach you some of the learnings that I that I acquire from this piece. Okay, it is written that the word essay is defined in the this thing: a literary composition on any subject. A literary composition on any subject. Okay. In fact, the word essay is somewhat loosely applied to a variety of compositions. Essays are models for Indian students because of their brevity and simple directness of style. Well, मुझको तो नहीं समझ में आया था ये सब, पर कोई बात नहीं, हम लोग बुक तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग समझ लेंगे किसी भी तरह से. ठीक है, तो फॉर दिस वीडियो वी विल ओनली फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a good essay, and for the next lecture we will discuss about how to prepare for an essay. Okay, भाई देखो, preparation बहुत important होती है. Why? Just because we don't prepare these writing composition exercises, and we take the exam and at once this sudden burst of, you can say, frustration that comes up mixed with laughter है कि भाई अब तो खत्म, अब मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो मन में आया वो लिख देंगे, पीछे वाले से देख के हाँ भाई, तो वो सब चल रहा है तो वो अलग बात है. भाई हर दिन अगर थोड़ा सा भी लिखोगे तो सुधर जाओगे. चल ठीक है, आगे बढ़ते. इन दिस बुक देर इज 5 points and 5 characteristics for good essay writing. Okay, first one is unity. But what is unity in this sense? Look, an essay must have only one
theme. Okay, that revolves around the all of the passages. And then comes order. What is order? For example, if I'm going to uh, write an essay on my, I mean, entire journey of graduation, I won't, I mean, start from the end, then leap into the mid, and then leap into the beginning. The initial stage in the fourth position, the last stage in the first position. These kind of things won't work. The examiner will easily get frustrated, and he or she will just समझ लो अंडा दे देगा. That you can't, that is something which you have to be aware of. Your essay must be very in a very good and ordered manner. Main thing here, then summary, and I mean, we will discuss this in our next video. But for general purpose, I mean general sense, try to make it in an ordered manner. Prepare in your mind, collect your thoughts, and then write an outline, and then write an essay. Okay, if you are practicing it every day, you will easily ace it, and you will easily get full marks in your examination. Okay, then comes brevity. What is brevity? Look, brevity is briefness, concise. You don't have to beat around the bush. बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बेफालतू के शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. भाई जिन वर्ड्स का इस्तेमाल तुम कर रहे हो एंड यू डोंट नो द करेक्ट यूसेज, you are using reticent in the place of reluctant. You are using huge in the place of small, big, little, or anything. Examiner will easily catch your mistake, and he will tell that this candidate, this student is not up to the par, and he or she will easily catch this flaw of yours. Okay, so I'm not saying that don't use good words. Use good words, but if the situation calls for it, okay. Don't use good words just for the sake of acting cool. For the sake of acting cool, you will become a fool. Okay, तो वैसा वाला काम नहीं करना है. ठीक, ब्रीफ रहना. देन कम्स द सेकेंड लास्ट पॉइंट. मुझे समझ में आ गया तुम बोर हो रहे हो, पर अभी पढ़ना भी बाकी है. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 मिनट बोल के निकल जाऊँगा मैं. ठीक. देन कम्स स्टाइल. For example, if you are writing a letter to your friend, you can add words like cheers. You can add words. I mean, you can use colloquialism, slang, and other things. आराम से you can use a pet language too. But if you are writing an essay, you try to use good vocabulary, which is good academic vocabulary. And if you are new to this, let me know. I will post videos on vocabulary too. Okay, or you can easily go to other YouTube channels and search for vocabulary like interactive English or other things. Will drop a link in the description box.
1 मिनट बस। पर्सनल टच, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल टच? देखो, बात ये है, मैं पालक पनीर अच्छे से बना लेता हूँ, पर भाई वो पालक पनीर बनाने में मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी डालता हूँ जो एक पर्सनल टच हो जाती है। मतलब मैं उसमें दही भी डाल देता हूँ, मतलब ऑड ना समझो, पर डाल देता हूँ, हो जाता है काम, ख़त्म हो जाता है, बन जाता है अच्छा खाना ऑलमोस्ट। सो पर्सनल टच इज नॉट, आई मीन, is not really equivalent to dahi in this context. But what I mean by what I mean by personal touch is that your own opinion, your own expression, your own feelings. If you're writing an essay on education, I mean, drawbacks of uh, Indian educational system, and you are getting one very super duper idea, okay, बहुत बढ़िया आइडिया है, शर्माओ मत, लिख दो, ट्राई करो कि लिख लो, वो आपका पर्सनल टच हो जाएगा। ठीक, देखो 11 मिनट हो गया, मैं भी थक गया हूँ। सो ओके, आज की वीडियो तो ख़त्म, लेक्चर ख़त्म, जाओ आराम कर लो। 5-10 मिनट बाद कि कॉपी खोल के इसका एक समरी लिख दो इस वीडियो की, ये एक तुम्हारा होमवर्क हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप दैट यू विल share and subscribe this channel. If you like this video, please do share and subscribe. बहुत मेहनत लगी है, मेरा गला बैठ गया ऑलमोस्ट, पर मज़ा बहुत आता पढ़ाने में। ठीक, ओके, जय हिंद, जय भारत।